के रास्ते पे चलते हुए नए भारत के निर्माण का संकल्प है। नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही थी उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आजाद हुआ है, या फिर निष्कर्ष ये है कि ये विशाल और विविध भरा भारत प्रगति के लिए सुनहरे गुलाम नबी आजाद जी, Rajendran Chaudhary ji, Union Minister, members of Parliament, and other distinguished invitees, friends from the media. At the outset, I hope resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression,